started from Bhopal towards Sanchi Stupa, approximately 50 kilometers from here. Reach in 1 hour or a little more than 1 hour. Sanchi, as we all know, is a place of religious importance to the Buddhists and to the Indians as such, worldwide. And the monuments and the relics that are present at Sanchi have always found their way into our textbooks in history and have been a glowing example of our rich Indian cultural diversity. Today we will just go and pay our salutations to that important site. Just be with us. The journey was long, but we were ready to play patience. Kilometers away, we have an interesting thing to see, the line of Cancer, or Kark Rekha as we call in Hindi. This falls right on this road and we shall be just crossing it. Keep watching. General maintenance of the roads was really impressive throughout. Just 5 kilometers from Sanchi now. Here we are. Welcome to World Heritage Site Sanchi. Time to get down from the national highway. District Rising. This is the booking office, so I am moving in to get my tickets. So we got our tickets. We are standing up a gentle stone. This is the parking area.
So from the parking area, we are slowly progressing towards the Grand Stup, the Mahastup. So we have got a sound and light show, timings of which are given here. Here is the soup, and this is the main entrance gate. This is the site plan of the Buddhist monuments at Sanchi, written both in Hindi and in English. The moment we stepped into the premises of Sanchi Stupa, the serene atmosphere filled our hearts with tranquility. There was a sense of calmness and ease everywhere. We have writings both in the English, Victorian English, Devanagari, Hindi and Braille script. This is the northern gate of Sanchi Stupa. The very sight of Sanchi Stupa instilled into our spirits a sense of general calmness. We are entering through this. We were enthralled by the exquisite stone carvings done up to 100% perfection. The various inscriptions on the walls. One really wonders that these inscriptions have continued unfaded through centuries. So we are going for a parikrama around the great stupa, traveling across the time zones. The main stupa is 54 feet tall and 120 feet in diameter. The original structure was a hemispherical brick structure covering Lord Buddha's sacred relics and was half of the present stupa dimensions. The original structure was demolished by Pushyamitra Sunga of the Shunga dynasty initially. However, it was his son King Agnemitra who rebuilt it to the present shape.
This is the east gateway and has got its index of scenes. Rian tried his hand on the Brahmi script. It was really interesting. The beautiful torans or the gateways were initially constructed by the Satavahana dynasty in the 1st century BC. Climbing upstairs. We have stepped up near the central dome. Up above and beyond, the distant landscapes silently witness this great spectacle, this great monument that has weathered and survived centuries of assault. So we have finished the parikrama of the great stupa and we are gradually descending down. A lot of structures that are dotting the entire landscape. From the scenic view. Here also we have got a headless stone statue of Lord Buddha meditating. We now faced the western gateway. Sanchi was always special for Emperor Ashoka as he met and married his wife Devi here. This is the south gate and these are the index of the scenes that have been depicted here.
This is the temple complex built in the 7th century AD. Temple is in ruins, but if you just use your slight level of imagination, you can just imagine what a magnificent structure it would have been in those days. How busy and how pious. This might have been the base on which the main idol was placed, or perhaps the Dharmaguru would have been sitting and preaching. Adjoining the temple complex, there are a series of constructions, all in ruins of course, but you just feel as if you are traveling through the different zone of time. The quietness and the solitude of this area throws so much of significance on the selection of the site by the great Emperor Ashoka. We are now standing in front of a temple of early Gupta period, which was usually characterized by a square base and a flat top. Interior is dark. A portion of the monolithic pillar of Emperor Ashoka, he built several of them with his messages encrypted on them. It still maintains the high gloss and polish. In the British era, Sanchi Stupa was first mentioned by Captain Edward Fell. However, it was Sir John Hubert Marshall who rediscovered and restored Sanchi Stupa to the present grandeur. This is building 43, built in the late medieval period. The campus was vast and interesting, but there was a paucity of time. We tried to make the best out of it.
चलो we are now progressing for the light and sound show at Sanchi Stupa. The light and sound show begins. स्वागत। हम यहाँ उपस्थित सभी सुधीजनों का अभिनंदन करते हैं और उन्हें न्योता देते हैं कि वे साक्षी बने भारत की महान परंपरा के सांची की कथा की। अब हम शुरू करते हैं अपनी विशेष प्रस्तुति, जिसका शीर्षक है शांति यात्रा। इस शांति यात्रा में हमारे सहयात्री बनिए, क्योंकि हम जा रहे हैं समय के उस खंड में जहां आपको महात्मा बुद्ध मिलेंगे, सम्राट अशोक मिलेंगे और ऐसे बहुत से विशिष्ट चरित्र मिलेंगे जो सांची की कहानी का हिस्सा रहे। ये कहानी आपको स्वयं इतिहास और वर्तमान सुनाएंगे, अर्थात इस कथा के कथावाचक इतिहास और वर्तमान ही होंगे। तो आइए उत्सुक वर्तमान के प्रश्न सुने और रहस्यमय इतिहास के गर्भ में झांकें। इतिहास इतिहास, ये तो मुझे कहाँ ले आए? काकड़ाव, चाहो तो इसे काकड़ाए, काकनाद बोट या बोट श्री पर्वत भी कह सकते हो, जिसे आज तुम सांची कहते हो। उसके ये प्राचीन नाम ही तो हैं। इतिहास, मैंने तो तुम्हें वहां ले चलने को कहा था जहां जाकर मन शांत और पवित्र हो जाता है, पर यह भयावह दृश्य देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। कारण है वर्तमान, कारण है। हिंसा और शांति का गहरा रिश्ता है। जो भीतर से अशांत होता है वो बाहर भी अशांति ही कहलाता है। जो भीतर से हिंसक होता है वो बाहर भी हिंसा फैलाता है। इसलिए पहले तुम भीतर से शांत हो। अब ज्योति के उस पुंज को देखो। ये है सांची का महास्तूप, जो आज भी विश्व को करुणा और मैत्री का संदेश दे रहा है। केवल तथागत बुद्ध के ही नहीं, उनके महान शिष्य सारिपुत्र और महामौदगल्यायन के अस्थि अवशेष भी सांची आए। हे अग्रज, आप फिर मुझे भ्रमित कर रहे हैं। मुझे ज्ञात है भगवान बुद्ध तो सांची कभी नहीं आए, तो उनके अवशेष सांची कैसे आए? तुम्हें भ्रमित करना मेरा उद्देश्य नहीं वर्तमान, बल्कि तुम्हारा मन शांत करना है। ये महात्मा कौन है इतिहास, जिनके दर्शन मात्र से मेरा मन प्रेम और करुणा से भर उठा, क्रोध और शत्रुता जाती रही, हृदय दया और मैत्री जैसे कोमल भावों को पा निर्मल हो गया। अपने सौभाग्य का आभार मानो वर्तमान, जो तुम्हें भगवान बुद्ध के दर्शन हुए हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 200 साल बाद पाटलिपुत्र में दूसरे मौर्य सम्राट और सम्राट चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। पिता बिंदुसार और मां शुभद्रांगी के इस बेटे का नाम था अशोक। जिसके जन्म की भविष्यवाणी स्वयं भगवान करे,
ऐसे पुत्र को पाकर तो सम्राट बिंदुसार धन्य हो गए होंगे। ऐसा होता तो इतिहास कुछ और ही होता। अशोक रूपवान नहीं था, इसलिए दूसरे भाइयों की तुलना में अशोक को पिता से प्रेम कम ही मिला। प्रेम के अभाव ने क्रोध को जन्म दिया। अशोक बचपन से ही क्रोध से भरा रहता था और समय के साथ वो स्वभाव से भी हिंसक होता गया। पिता ने उसे पाटलिपुत्र से दूर रखने के लिए उज्जैन का राज्यपाल बनाकर भेज दिया। जो प्रेम अशोक को पिता से नहीं मिला, वो विदिशा नगर के एक साहूकार की बेटी देवी से प्राप्त हुआ। अपने राज्याभिषेक के 8वें साल अशोक ने साम्राज्य विस्तार के लिए कलिंग से युद्ध छेड़ दिया। इस भीषण युद्ध में लाखों लोग मारे गए, लाखों अपाहिज हुए। कलिंग की धरती खून से लाल हो उठी। अपने सामने युद्ध भूमि में अनगिनत मृत योद्धाओं, दर्द से चीख रहे सैनिकों, लाखों मां का विलाप, हजारों विधवाओं का रोना, छोटे छोटे बच्चों का बिलखना सुन अशोक का हृदय पिघल गया। अशोक करुणा से भर उठा। याद आ गई उसे देवी, याद आ गए उसे करुणा और मैत्री से भरे बुद्ध। अब वो युद्ध का परिणाम तो नहीं बदल सकता था, पर अपना मार्ग तो बदल सकता था ना। उसी क्षण उसने संकल्प किया, ये मैंने क्या कर दिया? इस महाविनाश का कारण मैं अशोक। मौर्य साम्राज्य में युद्ध की As our vehicle carried us back from Sanchi to Bhopal, the words of the enlightened one, Lord Buddha, kept on resonating in our hearts. All the tiredness of mind and soul was wiped off as we contemplated and admired the depth of the teachings of the Great Soul. From Sanchi, we carried the spirit of love and compassion for years to come. Next time, when you plan to visit Bhopal, please take this place as one of the important places to visit. I assure you, you will never regret it. और कुशीनारा भी गया, जहां बुद्ध ने